the time for the brilliant and a very, very engaging and a very powerful panel discussion. Panel discussions are always very special to an event because there you get to hear multiple opinions, perspectives for a single, topic that we are discussing in the panel. So it's a brilliant panel. We are talking about PMS, AIF, alternative investment options. So similarly, in line of the same, we have a panel on investment management panel, where we are going to talk about innovative financial product offerings for individual investors, exploring ideas beyond traditional offerings, for which we have brilliant panelists available here today. I would like to request the panelists to please join us on the stage and kickstart this panel discussion. So good afternoon everyone. We start this panel discussion. The topic is innovative financial products offering for individual investors. So we all know that we want to be at the cutting edge of what we are offering to our clients, and here we have a panel where we will be discussing what is the cutting edge today, right? Okay, so I'll ask each of my panelists to briefly introduce themselves, what they do, आप क्या करते हैं और आप इस टॉपिक से कैसे कनेक्टेड हैं, इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट. एंड I'll start Mr. Mapuz. Good afternoon. आज से 10 साल पहले I started a company called Finolutions. I operate out of Gift City, Gandhinagar. And मेरा काम खाली product evaluation करना ही है. 3 things which I don't do: mutual funds, equities and bonds. Right? So very clearly ये topic के लिए this is very close to my heart क्योंकि मैं खाली alternates करता हूँ. And I am not a B2C player. I don't deal with investors. I deal with only wealth management partners in a certain geography, in a certain fashion. So alternates is the only thing that I do. Eat, drink and sleep alternates is my summary. Thank you. Hi, good afternoon everyone. Myself Bhavik Thakkar, CEO ABANS Investment Managers. So ABANS Investment Managers is subsidiary of a listed company called ABANS Holdings Limited. एंड हम लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं. वी आर एन एसेट मैनेजर ऑल्टरनेटिव ऑन द ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट साइड. हम लोग मार्केट लिंक डिबेंचर्स के बारे में आज बात करेंगे. आई हैव अ प्रेजेंटेशन आफ्टर दिस सेशन. सो मार्केट लिंक डिबेंचर्स अभी सेबी ने उसका टिकट साइज कम के 1 लाख रुपया कर दिया है. सो दैट विल बी ए इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू टू हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो ऑफर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस. We also offer dollar denominated products through our Mauritius entity. So we are on the alternate side. Hi, good afternoon everyone. My name is Ikmeet Singh. I am the co-founder and CEO of Lendbox and Paranam. हम लोग एक new age fixed income investment platform है with a particular focus on P2P lending. And we are licensed by the Reserve Bank of India. We have a special license of NBFC called NBFC P2P, जो कि हमें 2019 में मिला. We've been operating for roughly about 8 years now. बहुत सारे लोग might not know what P2P lending is. I mean, it is basically a two-sided platform. एक side पे there are retail investors, there are individual investors who have surplus capital, and on the other side there are people who are curated credit worthy population who seek this capital as credit. तो हम वो gap bridge करते हैं between the two parties. We give them a unified platform for them to transact. Why this is important today and for the next generation of alternate investments. Just to give you some statistics, I mean, आज की डेट में banks have shifted their focus from corporate lending portfolio to more of a retail lending portfolio. To our surprise, out of the 100 rupees that went out as credit from banks like HDFC, ICICI, 57 went to the retail lending side of it. And we as P2P lenders provide an opportunity to individual investors to invest in retail credit. And thank you so much for all of you to be here. We are a retail focused business. We have a small community of
roughly around 4 lakh investors who trust us, and we've been able to generate double-digit risk-adjusted returns for them over the last multiple years. Thank you. Okay, good afternoon, everybody. So my name is Mohinder. I think most of you might know me, Mohinder. So I represent Franklin Templeton. So I am heading Franklin Templeton Academy here. So for last, from the start of my career, I've been associated with all the mutual fund distributors, channel partners for their skill development. So we might have met, kabhi na kabhi, kahin na kahin, mile honge. So thank you AAFM for inviting me here. It's gonna be very, very interesting. So मैं तो यही कहूँगा to start with mutual fund सही है, and of course as the questions would be asked by our esteemed anchor who is the moderator for this session, definitely you will find some interesting insights that can help you to scale up your business, because I think at taking a cue from the previous presenter, Mr. Bagla, that sky is the limit. We have not even explored even an inch of it. So over to you, Deepak ji, please. ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. जब हम वर्ड यूज़ करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ इनोवेशन इन फाइनेंस? और अपूर सर ने अभी मुझे बताया था कि ये इन्होंने आज तक कभी मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट पे काम नहीं करा, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू डू इट. सो मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर इट. आई डोंट कंसिडर पीएमएस एज इनोवेटिव. फर्स्ट सेंटेंस, मैं इनोवेशन इसको बोलूँगा जहाँ पे जो हमारी नॉर्मल सोच से कुछ हम अलग करके कुछ करने की ट्राई करते हैं. नाउ आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, मैं इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ जो हमने इन द पास्ट किया हुआ है, बट फिलहाल वो चीज़ इंडिया में नहीं है फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न. बट दिस विल बी अ बेस्ट एग्जाम्पल कि मैं आपको इनोवेशन क्या हो सकता है वो बताने की ट्राई कर सकता हूँ. देयर वाज अ प्रोडक्ट विच वॉज अ ग्लोबल प्रोडक्ट, जो 3 करेंसी के बीच में आर्बिट्राज करके दे वुड जनरेट सम रिटर्न्स आउट ऑफ इट, बट इट वॉज नॉट यूजिंग एनी मैन्युअल इंटरवेंशन. खाली 3 करेंसी के बीच में इफ देर इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड पॉसिबल, देन ओनली इट विल ट्रेड. बिकॉज एंड दिस वॉज लग्जमबर्ग रेगुलेटेड. तो मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगा जहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है, राइट. सो फंडामेंटल थिंग इज, आप ऑल्टरनेट्स में कुछ भी कर रहे हो, आपको रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नाउ फ्रॉम ट्रेडिशनल थिंग्स, एंड लाइक वॉट मोहिंदर सेड, आई वेरी फर्मली बिलीव म्यूचुअल फंड सही है. दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द बेस फॉर एनी इन्वेस्टर, एनी डिस्ट्रीब्यूटर. ऑल्टरनेट्स तब आता है व्हेन यू वांट समथिंग बियॉन्ड दैट, एंड वेदर यू वांट और क्लाइंट वांट. तो इसके लिए बात करते हैं. सो देयर वाज दिस प्रोडक्ट विच डिड एक्सीडिंगली वेल, आई वुड से. अब नॉर्मल डेज के अंदर करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, दैट इज़ सच अ लिक्विड मार्केट कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलना बहुत मुश्किल होता है. बट देन सडनली किसी जगह पे कोई मलेशियन एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो गया, डॉलर में सबसे पहले स्पाइक आएगी, अदर करेंसीज विल टेक टाइम टू रीबैलेंस. वो एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स हो सकते हैं, एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी. 5.5 years track record of this product, 21.2% compounded annually, not a single day NAV drop. $20,000 minimum ticket size. I think this is what I call genuine alternate product, where there was a nice innovation, everything, all the tick box that you want, very decent enough. हर एक चीज़ में कोई चैलेंज भी रहेगी. So I'm not here to sell a product, so I have some flexibility for me to criticize as well. चैलेंज उसमें ये थी कि ये प्रोडक्ट तब तक चल सकती है जब तक ये प्योर एल्गो से चलती थी. Luxembourg regulators came back and said that any product which is 100% algo should not be given to a certain class of investors and should be restricted. Even ABCD fashions बहुत complications कर दिया. With immediate effect, we said we need to now stop doing all this, because अगर 40% view fund manager का लगाना है, then the fund manager can go wrong. In such product, I will trust a machine, I will not trust a fund manager, right? But that was an alternate investment का एक perfect example, which we normally do not work across and offer to an investor. And $20,000 was not a large ticket size कि हम client को नहीं दे पाए. Yeah, that is my one example if I have to give. Okay. Anybody else would like to add? What is innovative financial product?
See, innovation is one when we think out of the box, when we see beyond the obvious. So we are in a space which is very very competitive. People have access to the information at a very very rapid pace. आजकल change important नहीं रहा, the speed of change is becoming very important. तो मेरे हिसाब से client is also getting access to all the information that is there on the platform. So if we as distributors, we as client advisor, we as people into wealth management business, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो somebody else will come and take the center stage. अब innovation में there are once upon a time when we heard about blockchain or you can say cryptocurrency, fungible asset, non-fungible assets. I got a call last week that do you want to finance a Punjabi film? Now people are thinking on these lines. So innovation is happening at every place. People have money. For last 10 years, I think we should be proud as Indians. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि जितना wealth अब भारत में बन रहा है, उतना wealth किसी भी दुनिया के किसी भी देश में नहीं बन रहा है. तो innovations होती रहेंगी, बहुत innovative products आते रहेंगे. Please keep your eyes and ears open. तो we should adapt. We should actually adapt them as quickly as possible. That is my take on it, Deepak ji. Can I add? Yeah, sure. No, P2P lending again is a very very innovative thing. I think many people have so many things to. There is a platform that you reach. Okay. I Right. think. So innovation comes in multiple ways. Like sir mentioned, I mean, there are products which are innovative in nature. There are products which are innovative in how they are structured. We look at innovation in a slightly different way. I mean, we understand, like sir mentioned, there is a set of products which will be only suited for, let's suppose, an HNI audience or an institutional investor. However, platforms like us who have technology at heart feel that the access to such products should not be restricted or limited to a certain set of users. How we do innovation differently is that with the use of technology, what is at heart of us is that we can fractionalize an asset. What I mean by that is, let's suppose there is a property which is, say, about 100 crore. Like sir mentioned, there is a movie which will require a few crores to be put in. And we as technologists have the capability of breaking that down into smaller packets, into smaller portions, and distributing it to individual investors. Now, if I tell you, for an individual, if there is an asset which is, say, worth 100 crores, might limit a lot of investors which will have access to those. But if I say, if I can give an access to somebody with ₹1,00,000 to invest in assets like those, I feel that is going to be truly innovative over the next 10 years. With the rising middle class coming into picture, I think platforms like us will play a key role in how more and more people invest in institutional grade products, in HNI grade products. And I think we are at the cusp of that innovation, and thanks to the technology, we've been able to achieve that fairly efficiently. Great. So, for me, innovation is anything where we are able to reduce risk for the investors, right? I think वो एक बहुत important है. And for the audience which is sitting here, I think अगर ये innovation को अगर हम समझते नहीं है, for example, then there is a risk that we may do disservice to the investor, because एक आपका innovation होता है, let's say for execution, which is very good, but अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट हमने अगर अच्छा नहीं समझा है, अच्छे से समझा नहीं है एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, राइट, देन देर इज अ चांस दैट इट मे गेट मिसकम्युनिकेटेड. यू मे नॉट हैव एन इंटेंशन ऑफ उसको कुछ गलत सेल नहीं करना है आपको, बट आई थिंक दैट इज वाई इनोवेशन इज इम्पॉर्टेंट. बट हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड द इनोवेशन एंड व्हाट इज योर रेडीनेस टू अंडरस्टैंड द इनोवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So, Bhavik, we are with you. So, I'll just ask another question to you. Why are market-linked debentures an innovative product? And how are they different from a bond or debenture or traditional bond products? सो सबसे पहले आपने जो दीपक जी सवाल पूछा कि मार्केट लिंक डिबेंचर कैसे अलग है, राइट, और उसके साथ में उन्होंने ये पूछा कि बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से कैसे अलग है, राइट.
एक्चुअली सबसे बड़ी एनोमली इसी में है कि आज तक लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मार्केट लिंक डिबेंचर जो है वो एक प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट है। आप सोचिए कि उसमें क्यों सफिक्स लगा है मार्केट लिंक। अगर मैंने उसको निफ्टी के साथ लिंक कर दिया, ठीक है, तो मुझे निफ्टी लिंक रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड भी निफ्टी लिंक्ड है ना। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है और मार्केट के रिटर्न्स के बेस पे आपको रिटर्न मिलता है, करेक्ट। द फंड मैनेजर एंड द एनएवी आल्सो विल मूव बेस्ड ऑन द मार्केट रिटर्न्स ओनली। तो मार्केट लिंक डिबेंचर जो है वो इसलिए इनोवेटिव है कि मैंने अगर निफ्टी के साथ लिंक कर दिया या मैंने कोई स्टॉक के साथ लिंक कर दिया, ठीक है, तो स्टॉक जैसे ऊपर नीचे जाएगा उसके हिसाब से मैं आपको रिटर्न दे पाऊंगा। जबकि कोई नॉर्मल डिबेंचर है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है कि 8% 9% आपको मिलेगा। जबकि मार्केट लिंक डिबेंचर में आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, जैसे प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, पीएमएस के थ्रू, एआईएफ के थ्रू, बट देर इज नो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। जैसे कोविड में स्टॉक मार्केट नीचे चला गया था और उसी टाइम के आपको फंड की रिक्वायरमेंट आई तो आपको रिडीम करना ही पड़ेगा कितना भी नुकसान हो, करेक्ट। जबकि वही टाइम पे अगर कोई प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर में आपने इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे आपका जो कैपिटल वैल्यू है वो वापस आता है, आपको उसमें नुकसान नहीं होता है। सो इट इज़ थ्रू द यूज ऑफ द डेट एंड डेरिवेटिव एक मार्केट लिंक डिबेंचर इनोवेशन ऑफर करता है। Great. Abu sir, taking the same question, how are AIFs an innovative financial product, and why should they be given to normal clients? Right? Why should these people add them into their portfolio? पहले तो ये कि हमें नॉर्मल क्लाइंट की डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी देन इन Normal दैट केस। client, बट लेट मी पुट इट दिस वे, फ्रैंकली एआईएफ एज अ वर्ड अगर हम बोलते हैं is a very generic term. It is like saying that we are investing in mutual funds. The mutual funds will be right from your liquid fund to a sectoral fund. Risk profile of each and every category is extremely different. Almost the same thing applies for AIF. AIF mein you have credit funds. AIF will also have film financing, which is one notch above in terms of possible risk factors. And in AIF, you will have something which is extremely low risk as well. The returns, and most of us, and I'm talking of most of the people, we look at AIF as a possible alpha generator over a PMS or some other option. The moment word AIF comes, we link it up with returns. That is the biggest challenge. आप कोई भी, from a theoretical point of view अगर आप देखोगे, AIF का single largest purpose is meaningful diversification. It is not returns. आपके portfolio को अगर आपको balance करना है, for that meaningful diversification you have to look at an AIF. And ज़रूरी नहीं कि हर AIF innovative हो. Innovation comes in this fashion that अगर आपको private equity में invest करना है, private equity के अंदर एक retail investor की capacity नहीं है to do those kind of deals. right? आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों को साथ में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज स्टॉक्स में यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन स्मॉलर साइजेज ऑल्सो. आप स्टॉक्स की एसआईपी कर सकते हो. आप प्राइवेट इक्विटी में कैसे एक्सपोजर लोगे? देयर इज नो वे यू कैन डू दैट. तो उसके लिए आपको एआईएफ में आना पड़ेगा. दैट देयर इज अ पूल ऑफ प्राइवेट इक्विटी अपॉर्चुनिटीज दैट आई डू इन्वेस्ट वाया 1 crore ticket size, and then the investor has an allocation to private equity in the portfolio. Having said this, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट एंड लॉक इन के लिए वो रेडी है कि नहीं है. सेकेंड थिंग इज, इफ एंड दिस इज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट एज वेल, कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है. इफ वी डोंट अंडरस्टैंड दैट सेगमेंट वेल, टिल दैट टाइम लेट अस नॉट इवन टेक इट टू द इन्वेस्टर. एआईएफ बेचने की किसी को जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. टेक योर ओन स्वीट टाइम. But there is a difference between AIF and alternate investment. That is something which again हमें ध्यान रखना पड़ेगा. What we are talking about as P2P lending is an alternate investment. It is not an alternate investment fund. A lot of people many times mix both things together. We also do AIF, and when we ask them what exactly do you do in AIF, they will say we do P2P lending. Now
both are different is what we need to keep in mind. There is, and I'm not saying one is better over the other. But ये basic चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. That's a key takeaway for you. That's the reason why I'm just touching upon that. Right. Igni sir, how are PMS a good addition to the portfolio of a client, You mean P2P? P2P? And how can risk be assessed in a P2P thing and managed by investors? See, again, as I said, I mean, we are an asset class which is fairly new, right, as compared to mutual funds, equities, any format of AIFs, PMFs we are talking about. So the kind of education that is needed in people is of prime most importance to us. But at the end of the day, what we've understood is, and most of the people who are early adopters of P2P lending were the people who would be from banking industry or from technology industries. Majorly because they understand banking operations, majorly because they understand the risks in the lending space. As sir rightly mentioned, yes, AIF and alternate investments are different. Though how we differentiate and distinguish between the two is that we are much more transparent and we give the control to the user rather than to a fund manager to manage your funds. Though we create different buckets, risk buckets, and we advise people according to their risk bucket and try and position appropriate risk buckets to individual investors. And which brings us to a very important point that how do you manage risk? I mean, risk is something which is inherent in the product. Credit risk, risk of default, counterparty risk, all those things are fairly important to address. I mean, also I want to highlight that the regulator in our case is RBI, not SEBI. And RBI came up with the first draft of P2P lending regulations fairly early. I mean, when the industry was not even 100 crores in total, RBI came out with the draft. And the licenses started rolling out in 2018-19. And with that, I think RBI tried to manage a lot of risks that we're talking about. Though we're still advised, and we advise our investors that yes, there is an inherent credit risk, but how have we taken care of that by having multiple layers of risk mitigations mechanisms is something that is very private to the platform. For us, for example, at a portfolio level, on 100 rupee, I mean, our portfolio will generate a gross yield of say 21 rupees. So in an ideal scenario, in a no-risk scenario, an investor would earn 121. Our traditional NPAs have been less than 1%, but let's assume a peak NPA of 2.5–3%. What we've done is we've aligned ourselves to the success of the investor. So what we do is कि पहला 111 investor को मिलेगा. What is the return that I'm asking the investor to expect? The first 111 will go to the investor, and then anything net of default will be my margin. What we've done by doing this is keeping the investor first and making sure कि investor पैसा बनाए. Over the last 3 years, not even a single investor can come to us and tell कि मैंने ये expect किया था and this is what I've not made from the platform. And because of which we've been able to grow our AUM fairly fast as compared to a lot of traditional industries. Another very key contributor to risk mitigation is diversification. Like sir mentioned, I mean, AIF, the primary role of an AIF fund manager ideally would be to diversify funds in an appropriate manner. What we've done, and just because we are technologists at heart, we've been able to take that to another level. I mean, today, an investor who comes in with a lakh rupee or a 50 lakh rupee, I'm able to diversify his funds in individual loans to as low as 100 rupee also. And by doing that, what I've done is I've diversified his risk across thousands of credit seekers. And in a portfolio like AIF, it goes with the thesis of an AIF that in a portfolio, in a perfectly diversified portfolio, your principal at risk will be minimum. And that is the thesis that we go with.
Another very important risk that we have to take care of is counterparty risk. People assume that the money comes to us and then we deploy. We are not money managers. We are just a facilitator of the entire process. We run, and RBI has determined the entire fund flow. We run escrows both for investors and the borrowing side. Escrow is operated by a bank operated trustee, which is ICICI trusteeship in our case. And each transaction that goes out of the escrows is approved by the trusteeship. So by doing and taking care of all these things, we've tried to mitigate risks in the transactions. And as I said, as proudly over the last 3 years, not even a single investor has lost a single rupee or not made the expected returns. Another, we also run a fairly efficient liquid offering on the platform. An offering that generates daily interest, and maybe we can talk about that later, probably. Okay. Mohit sir, what are some innovative products in mutual fund? Because we know there is a SEBI categorization of funds. So, is there room for product innovation and maybe process innovation in mutual funds? सो आई थिंक दीपक जी आपने बिल्कुल सही कहा. मैं प्योर हिंदी में आऊँगा. इनोवेशन म्यूचुअल फंड में डे वन से हो रही है. आई थिंक चेंजेस बहुत होते हैं. हाउ मेनी ऑफ अस आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइमरीली आउट हियर? So you are in the best place, my dear friends. So नए innovative products आते रहते हैं. I think FOFI, then we have geographical asset allocation products, then we have now BAF was a big revelation here. Now innovation funds, MNC funds, technology funds. So mutual fund में क्या होता है? You have the tendency to catch the trend at the earliest. अगर वो सबको पता लग गया वो ट्रेंड नहीं है. अगर आपने उस ट्रेंड को पहले से पकड़ लिया, then you get the access of making money out of it. So innovation has to be at हमारे यहाँ पे तो we always keep on looking at what is what is the best way that we can get our investors a very good return. REITs कर लो, InvITs कर लो. Then of course PMS, another extension of, we can say it's an extension of a mutual fund, wherein there is a little bit of more customization, that you feel that you are in a control of a thing. Still you can't choose the portfolio. That is always there. So innovation हो रही है, होती रहेगी. डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में भी बहुत इनोवेशन है. पीपल आर फाइंडिंग डिफरेंट इनोवेटिव वेज ऑफ रीचिंग टू योर क्लाइंट्स. आप लोग भी करते होंगे. पहले तो क्या होता था, सीधा सीधा हम जाके रेफरेंस मार्केट से थे. आजकल नेचुरल मार्केट से निकलकर हम अननेचुरल मार्केट में भी आ गए हैं. सो अ पर्सन सिटिंग इन दिल्ली माइट बी केटरिंग टू समबडी सिटिंग इन से कोलकाता ऑल्सो. सो टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी गुड असिस्टेंस. अगर मैं म्यूचुअल फंड की मैं बात करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फंड जो आप लोग सभी हैं, तो माई हम्बल रिक्वेस्ट, टेक्नोलॉजी को जितना अडॉप्ट कर सकते हैं करते रहिएगा. दैट इज़ द इनोवेशन दैट यू शुड डू. एक और इनोवेशन, आई थिंक इनोवेशन बड़ा हर जगह पे ही आता है कि जापान इज़ लैकिंग इनोवेशन, इनोवेशन इज़ इनोवेशन, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स इज़ डाउन. सी व्हेन वी हैव लार्जर ऑडियंसेस, व्हेन वी हैव लार्जर पॉपुलेशन, उसमें एक छोटा सा आइडिया भी बहुत बड़ा बन सकता है. हु वुड हैव थॉट कि हम सब्जी वाले को या पानी पूरी वाले को भी बिना पैसे दिए डिजिटली पे कर सकते हैं. सो the innovation is happening at every single point of time. कोविड टाइम पे मेरे जैसे लोगों ने भी खाना बनाना सीख लिया. That is again a big innovation. Now that we are suffering in the hand, we are at the mercy. So all these things, I think दीपक जी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. और म्यूचुअल फंड, आई थिंक मैं पहले भी कहता हूँ, so it's been 19 years into this industry. Many of you might have met me at different forums. अगर हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ इंडस्ट्री इनोवेट नहीं करेंगे तो क्लाइंट अपने आप इनोवेशन ढूंढने चल पड़ता है. तो वो जो क्लाइंट इनोवेशन ढूंढेगा वो एक्सीडेंट करवा सकता है. इससे पहले कि वो इनोवेशन ढूंढे, आप ज़रूर ढूंढ लीजिएगा. ओवर टू यू दीपक जी. थैंक यू. अबू सर, आपसे एक क्वेश्चन बहुत मैं पूछने का मन है, एंड दैट इज ऑन एंजल इन्वेस्टिंग एंड स्टार्टअप. व्हाट डू यू थिंक इज द करंट सिनेरियो ऑफ एंजल इन्वेस्टिंग एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया, and how can we as mutual fund distributors and other advisors bring our customers into a place where they can start investing into startups and angel investing? So पहली चीज़ ये कि when we make presentations on angel investing, मैं एक स्लाइड का बहुत
इफेक्टिवली यूज़ करता हूँ, विच इज़ अ स्लाइड ऑफ 1 elephant and 6 blind men. अब इफ़ वी आर ब्लाइंडेड वी विल नेवर गेट टू नो कि सामने एनिमल कौन सा है. फॉर स्टार्टअप्स हमें one thing which is a political thing, so I will not speak in an open forum. But startup is another such thing where the entire crowd could be divided in two parts. People who like startups or who believe startups are good, or people who don't. There is nothing in between. Right? The moment I use the word startup, a good part of the audience will feel paisa gavane ka dhadda hai. Right? Very simple. Now, answering your query, where do we find what is the appetite of investors? आप आपके neighbors का एक खाली survey करोगे ना तो मालूम पड़ेगा that a lot of people are already investing in startups which possibly you are not aware of. It has become mainstream जो हमें शायद पता भी नहीं है. Very few people know that startup में आप as little as 1 lakh rupee per startup invest कर सकते हो legally through an AIF. Right? Very few people know. Startup का portfolio बनाना कोई इतनी difficult चीज़ नहीं है. You can build a portfolio for 25 lakhs over a 5-year period. As good as making 1 lakh rupee a month SIP in 2 years' time or even lesser over a 5-year period, and you can build a portfolio for, you can call micro cap, micro cap, startup को जो भी नाम देना है आप दे सकते हो. But that is possible. Because we don't look at data, we make assumptions. So let me share some data जो मेरे को अभी immediately याद आ सकते हैं वो. And this can be verified, of course. As on 31st of May, which is the last published data, we have 99,380 startups in India. Could you repeat that number? 99,380. 99,300. Around 1 lakh startups. So round off करके आप 1 lakh बोल सकते हो. For political reasons आपने बहुत सुना होगा कि 4 साल पहले या 5 साल पहले this number was 600 or 800. Now that doesn't mean कि पहले startups नहीं हुआ करते थे, पहले भी हुआ करते थे. But government ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, which is to make startup registration as good as mandatory. अगर मेरे को मेरा business आज कुछ नया शुरू करना है और दिमाग में है कि मेरे friend भाविक के पास से मैं किसी दिन पैसा लूँगा, if I have to take any external money, I should be a registered startup. बहुत छोटी चीज़ है, and it's a very simple thing. It takes 5 minutes for you to register a startup. आप खुद भी कर सकते हो. Now that registration is as good as compulsory, government के पास data है कि कितने startups है, उसके pain points क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, so that the startups thrive in this country. That's one. Second, another thing which I say is that the biggest brand ambassador that we have for startups in India is the government of India itself. इस बार की बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण जी ने 21 बार 21 times she used the word startup. बजट स्पीच के बाद जब 15 मिनट में PDF फाइल किसी से WhatsApp फॉरवर्ड में आई, I did only one thing first. Control F to figure out how many times is the word startup there in the presentation. आज से 10 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में वर्ड एग्रीकल्चर हुआ करता था 21 times. Now this shift from agriculture to startup अगर हम विजुलाइज नहीं करेंगे, we will be late in adoption to the world of angel investing. So what we should look at is कि जो symptoms अपने को मिलते हैं, जहाँ पे change हो रहा है. See, innovation is not just necessarily, and I am a firm believer, technology is the biggest enabler. But technology के अलावा भी, you can be innovating. Just if you are early mover and if you can visualize this and start looking into this, you are doing something innovative for yourself and your clients both. And finally, I won't take much time now. Just for records मैं बोल रहा हूँ, India is the 3rd largest startup ecosystem in the world. We are growing at the fastest rate in terms of number of investors and number of funds, both. Upwards of 35% in both the instances, compounded annually. Compared to US or China, which is growing at about 5% on an average in both the segments. If this is the growth and if we are missing out the growth, we have to go back today and think over कि हमें क्या करना है हमारे business model में. That's the only thing I would conclude as a submission as of now.
So Bhavik, a very general question. If we want to include innovative financial products in our offerings, what should be the process? So, first of all, you know, the financial advisor should check what is the level of understanding that the investor has, right? Plus, what is your current composition, right? What are your objectives? What is your life goal? And to achieve that life goal, what is it that has already been planned, right? Because a lot of investors have been investing in, let's say, mutual fund for over 20 years now, right? So whether they have also grown in terms of their understanding about the market along with their wealth, that becomes the most important criteria. Because ऐसा हो सकता है कि investor को knowledge ज़्यादा है, maybe portfolio कम है, and it is reverse way also possible. बहुत बड़ा portfolio है, but understanding कम है, right? अगर ये mismatch हो गया ना, तो we as a financial advisor we run a risk of, you know, suggesting a wrong product और having a lesser allocation कि किसी कस्टमर की एपेटाइट ज़्यादा है एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, बट अगर हमने वो एनालिसिस नहीं किया है तो शायद हम लोग उसको अंडर इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना कि स्टॉक 10 गुना हो गया बट आपका 1% आपका वेल्थ का था. सो दैट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एंड सेकेंड थिंग इज हाउ various assets are complementing each other, right? Because ultimately as a financial advisor, and I think morning में व्यास के presentation में I think one thing he mentioned very clearly, which I absolutely agree with it, is that investors are looking at a distributor alpha. वो बोल रहे हैं कि ठीक है फंड मैनेजर तो अपने हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट करेगा और यू नो आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, बट मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कितना मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है, right? People have an opportunity to invest into index fund directly also, right? और मेरे presentation में मैं दिखाऊंगा 89% of large cap mutual funds in India are underperforming their benchmark. तो people will start thinking, no, investor भी सोचेंगे कि मैं अगर डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इंडेक्स जितना रिटर्न मिलेगा. तो दैट इज वेयर डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम बढ़ जाता है ना कि बॉस आपको भी पीपल आर वॉचिंग यू ऑल्सो, एंड अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो कोई और डिस्ट्रीब्यूटर फिर इन्वेस्टर को पॉइंट करेगा. सो यू मे लूज अ कस्टमर इफ यू आर नॉट अलर्ट. सो आई थिंक दीज आर द कॉम्बिनेशन यू नो विच शुड हेल्प कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो. Yes, you like to add something? I'm not the right guy for the market link products. Okay. But debt-based products, one other very interesting part that is, I mean, so as we understand and as people start aging, as investors age, their portfolio you know, shifts from majorly a equity-heavy portfolio to a debt-heavy portfolio. I think which is where, even though we are technologists, we have a technology company which majorly focus on younger investors. But the sweet spot for the investors that suit us best are in the age bracket of say about 50 to 60 years. People who do not want a lot of volatility in their portfolio. People who want more predictable, stable returns. I think that's where companies like us come into play. And what about the post-retirees? So yes, obviously there is and though just because we run our own asset class, so we are able to structure products particularly focused on different set of people. I mean, what we've structured a few quarters back is a program which is particularly focused for retired professionals and people, investors majorly, where you can have similar to a mutual fund systemic withdrawal plan, wherein you can have most of the retirees usually have a pinpoint that they need a fixed source of income, and platforms like us who can create products that generate fixed income returns suit very well for them. I think we've also seen kids investing on behalf of parents, and then parents getting that monthly income. I think that has worked very well for us. Great. Okay, देखो, my thoughts will always be on mutual fund. So
pardon me for being very biased on it, but I think कुछ दाग अच्छे होते हैं. So first of all, I think industry जो investment landscape जो है, I would call it that investment buffet which is available for a prospective client. हर client के पास आपके पास भी बहुत सारी options होती हैं. It is about how you pick and choose. See, a one size fits all बहुत rare होता है. So my idea is understand your risk appetite. Of course, your risk profiling is very, very important. Time horizon is very important. I think people are wanting bigger results, grand results in a snap of a finger, which is not possible. So you got to be patient with your investment. I think any investment that you do should have a gestation period. मैं तो यही advise करता हूँ. If you are coming into a mutual fund, think of a longer perspective. Now the data is also, Deepak ji मैं बताऊँ. So if we talk about 10 to 12 years back, तब लोगों को म्यूचुअल फंड समझाना पड़ता था, SIP बताना पड़ता था. Now people know it. Now the average lifespan of a SIP would be like 1 year, 2 years, 3 years. जहाँ पे आपका intervention, I think I still feel role of understanding the product is important. But जो आप कह रहे हैं, the gap between a person having a bigger portfolio and a lesser knowledge, higher knowledge and a smaller portfolio, that will always be the Pareto principle will always be there. 80% of the people who are contributing to your portfolio will be only smaller, a small bunch of people. So if I talk about say 12 years back, this SIP book very, very small. SIP book is now 15,000 crore plus. If I talk about AUM, I think Sandeep sir has already, CEO of Trust MF has already given. The AUM was like not even say 3 to 4 lakh crore. Now it is nearing 50 lakh crores for a mutual fund. So average lifespan of a SIP is now more than 5 years. अब जहाँ पे distributor, जहाँ पे कोई manual intervention है, वहाँ पे the average lifespan is even more of that. So longevity of the investment is more with when there is an intermediary. I think a clap for everybody. I think आप लोग जो कर रहे हो, time and again there has been a advertisement mutual fund सही है. मैं तो ये कहूँगा mutual fund distributor भी क्या है? सही है. So and I want you to earn more because this is about innovative. See, mutual fund will have its own kind of, it is still a retail product. Out of this AUM, 53% is individual assets. And out of those 53% individual assets, 87% belongs to you, to the distributor. Now these are the people who are bringing to your table certain kind of other investment which are lying idle. There is a hell amount of money which is there in a banking system. और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप में से कई लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, they have big amount of money parked in banks. Yes or no? अभी इस पे साइलेंट क्यों हो गए सभी? हाँ? नहीं, आपके कस्टमर अपना भी होगा. They themselves have their more of money parked into real estates, into gold also. बट अभी हमको अपने चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने पोर्टफोलियो को भी तो रैशनलाइज करना पड़ेगा ना. सो इफ आई एम 70% इनटू रियल एस्टेट एंड 20% इनटू द अदर एसेट्स, देन ऑल्सो देयर इज अ बिग चैलेंज. सो माई ट्रांजिशन शुड ऑल्सो हैपन. P2P is there, startup financing is there, alternate investments are there, mutual funds are coming up with innovative products. Everything will coexist, please. और एक मैं आपको बता ही देता हूँ कि डिजिटल को जितना आप टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करेंगे, जितना नया नॉलेज को सीखेंगे, यू विल डेफिनेटली, योर बुक विल स्वेल, योर बैलेंस शीट विल स्वेल, एंड यू विल ऑल्सो ग्रो बिगर एंड बिगर. थैंक यू सो मच. Thank you. So with this we conclude this panel. We can take some questions. I think people would be wanting. Oh, so great. So whom do you want to ask to? Okay. पूछिए सर, पूछिए ना. माइक दीजिए ना उनको सर, प्लीज. कैन वी हैव अ माइक? सो एवरीबडी शुड हियर योर क्वेश्चन, प्लीज. आप इधर से एक माइक प्लीज. नीचे. मोहिंदर जी, भी आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए. SIP का अगर हॉरिजन 3 साल का है, जिनका हैंड होल्डिंग होती है 5 साल हो जाती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि जैसे आपने हमें यहाँ फोरम में ही बता दिया, यू शुड पुट यू पीपल लाइक यू शुड पीपल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ रेगुलेटर अथॉरिटीज़ के पास, ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। ऐसा लग रहा है कि जो ये बात आप कह रहे हो ना, इट इज़ बिटवीन यू एंड वी, जो सेबी है, जो रेगुलेटर है, उनके पास ये बात पहुँच नहीं रही है। ओके, जो पहुंच नहीं रही। ओके, यू गॉट अ पॉइंट व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। ये बात आप आगे भी फॉरम पे करते रहेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। सी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। जितना भी मैंने डेटा दिया है ना आपको, ये दिस इज ऑल डेटा, दिस इज अ पब्लिश डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस डेटा कम्स टू अस, वी डोंट फॉर्मुलेट दिस डेटा। जो भी मैंने कहा, द लॉन्जिविटी ऑफ एन एसेट, SIP बुक कितना बढ़ गया, ये www.mfindia.com से लिया हुआ है। नो और ये एम्फी क्या है? एम्फी इज अगेन सम इनिशिएटिव टेकन बाय सेबी। इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स सेबी। और मैं आपको बता देता हूँ, टाइम एंड अगेन आई थिंक आई बिन टू टू वेरियस फॉरम्स, हम अपनी बात प्रेजेंट करते हैं। सी रेगुलेटर जो हमारा है, हमें उसको भी समझना है। सेबी has lot many things on the plate. Mutual fund is one of them. So end of the day, the regulator will always think investors' interest at the first priority. आपको क्या करना? I think इनका सवाल भी था, we had a dearth of time. I can say change एक बहुत important चीज़ है. One thing is constant, that is change. Mr. Barack Obama, उन्होंने अपनी election campaign इस word से शुरू करी थी कि first of time non-white president kind of. I'm not taking the other way, otherwise I'll sound a racist kind of. हम ये डिफरेंट फॉरम्स से पहुंचाते रहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को जो है, इट शुड बी मोर स्ट्रेंथन। और आपको ये मैं बता दूं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट कैंपेन, एड कैंपेन विच इज प्राइमरली ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स? यस और नो? देखा है कि नहीं देखा है? मैं डिस्ट्रीब्यूटर, जागो डिस्ट्रीब्यूटर जागो, एम्फी ने बनाया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पे प्रॉपर कैंपेन है, बना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपको अपना काम करना है सर, यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क। आई बीन इनटू दिस इंडस्ट्री वेयर नोबडी वांटेड एजुकेशन, सो टॉक अबाउट मतलब कि म्यूचुअल फंड में क्या सिखाएंगे किसी को। सो कीप ऑन डूइंग योर वर्क। वी आर डूइंग आवर बिट ऑन द पार्ट ऑफ AMC। ऑफ कोर्स इट्स अ डायनामिक, कुछ चीज़ें हो पाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो बी विद अस, वी स्टैंड ऑलवेज, वी ऑलवेज, द इंडस्ट्री स्टैंड ऑलवेज विद द डिस्ट्रीब्यूशन। Great. Thank you So so much. with this we end the panel. We are already running late of time. Thank you very much. Thanks a lot. It was a very wonderful, engaging and powerful panel. Thank you so much everyone for your participation. Thank you to all the esteemed panelists for making it so graceful. Thank you so much.